Assalamu alaikum, Dr. Usman. So, Walaikum welcome to assalam. this session. So, in this session, we are going to discuss the complications of the bariatric surgery, right? So, Yes. so let's start with the first scenario. The 45-year female patient has presented in the emergency department with a 3 days history of repeated episode of vomiting, uh, colicky abdominal pain. She is dehydrated and seems to be very tired. On examination, her pulse is 110 per minute, blood pressure is 110/70. So her abdomen is slightly distended. So how will you approach this patient? Okay. First of all, I would like to take brief history from the patient. What is the nature of vomiting? How many episodes of vomiting? Does she have abdominal pain associated with any distension? She has absolute constipation or not? What is the color of vomitus? And does she have any absolute constipation or not? And then Yes, I will so sever. it's a bilious vomiting. It's a bilious vomiting, Okay. and it's around 6 to 8 episodes in a day. This associated with absolute constipation and abdominal distension. Okay, then I would, while taking the history, I will start resuscitation to the of the patient. How I will you will, resuscitate? I will pass IV lines, start fluids and fluid and electrolytes, ringer lactate. I will pass NG tube, keep make patient NPO, and because she is having, I will take a history of any medication or previous surgical history, and I would. Okay, you were given the ringer lactate. I will give her a ringer, a normal saline because Okay. she has a bilious vomiting and she is probably hypokalemic. She is presented with a gastric outlet obstruction or upper GI obstruction. I will take history of any previous operations, I will perform digital rectal examination and I would like to investigate what is the cause. I would get her X-ray of the abdomen in erect and spine position. After resuscitation, I will do a digital rectal examination to see whether there is any impacted So, stool. so the And digital rectal examination didn't reveal any significant finding, and the X-ray of the abdomen shows multiple dilated air-filled bowel loops. okay, then I would continue my resuscitation and antibiotics. How will you continue? I, Which fluid will you administer in this patient? because this patient has a bilious vomiting, she has hypokalemic, hyperchloremic, metabolic alkalosis. So I will give normal saline and along with potassium supplements, and I will give antibiotics. I will pass NG tube, and then I will see what is the response. Then I will get contrast and oral contrast and a CT scan of with oral and IV contrast So what are and you see. suspecting? What are you Uh, suspecting? my suspicion will be a small gut obstruction, and probably it can be because of any band, or there is can be volvulus, or there can be. I will also examine hernial orifices, whether she has any hernia or not, So there is no and evidence of any hernia. Any okay, orifices she are can. intact. Okay, I would like to see whether there is any internal herniation or not, and How will you see? How will you come to know that this patient has internal hernia? I will see whether there is any cutoff line, cutoff point on CT scan and on X-ray. Is How there will you? any? Okay. So what information will you provide to the radiologist while requesting for the CT scan? I would ask the radiologist to see whether there is any transition point between uh, small bowel because she has a bilious vomiting. It means that she has a small bowel obstruction distal to second part of duodenum. Uh, uh, So the and CT scan, okay, CT scan didn't reveal any significant finding which pointing toward their specific point of view, the transition. okay, then I will see electrolytes, whether she has hypokalemia or not. I will also like to take thorough history, whether she has any previous history of operation. I will examine the abdomen Yes, to this see. patient
underwent the laparoscopic gastric bypass 1 year back. Okay, then because most of the patients with gastric bypass have internal herniation or they have reflux, so I will ask the gastroenterologist to do upper GI endoscopy to see is there any. So he has performed the endoscopy. There is no evidence of any esophagitis or anything significant on the upper GI endoscopy. Now, the patient is with you. Now, the 12 hours have been passed. Okay, the distension with the conservative measurements have not relieved. The abdominal pain is persisting. And Okay, what will be your next step? and then So you are I will do oral contrast studies with okay. water Meanwhile, soluble how will you contrast. how will you give the fluids? Will you keep the patient on the normal saline only? No, I will also give a ringer lactate along with normal saline, and Ringer and because normal saline. yes, and Okay. because she So why has why do you want to keep on the normal saline and the ringer only? The patient, because do you think, doesn't require any calories? Caloric require, how uh, will you? because most of the patient in hypovolemia, it is the isotonic saline has to be given to the patient, Okay. Okay, and right. So let's right. So then the upper GI endoscopy didn't reveal any significant finding. I would like to do water soluble contrast studies to see any obstruction So when or water stricture. soluble contrast with your water soluble means Oral gastrographin. gastrographin, what kind of study you are requesting? Barium follow through. Barium follow The through. barium follow through, Oh, sorry, gastrographin follow through. gastrographin follow through. Okay, Yes. right. And I would like to see where is the point of obstruction. I would like to reveal the anatomy because she has previous history of gastric bypass, Roux-en-Y gastric bypass. So I would like to know the anatomy, and then I would also like to do uh, uh, barium enema to see whether there is any obstruction or not, because X-ray is not significant. And if So it right. So and if even she the GIC didn't is unable to reveal any transition points. okay, then When the because she patient's has a abdominal pain is increasing, the distension, then I abdominal will pain and the tenderness is increasing. okay, then I will plan laparotomy because her obstruction is not being relieved and there is a risk of strangulation. So I will do laparotomy to see, because most of the time there is a band or there is internal herniation in the small retrocolic space. Momentum because in the mesenteric window in Okay, the patients you who okay, undergo. right. So you have performed the laparotomy, and you Yes. notice that there's internal herniations. The one loop of the uh, bowel is going through the into the posterior to the root limb. In that the previous limb was fashioned to the it was a retrocolic. So 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 what will your next step? Oh, I will try to release the loop and see its viability, whether it is viable or not. If it is viable, then I will. It's not viable. So the Okay, loop then I around will. 50 centimeter of loop, it's not viable. And is it proximal loop or distal loop, elementary loop or biliary loop? It is the common limb which was herniating. So 50 Oh, centimeter of the common limb. okay, then because it is non-viable, I have to resect it, and I will do resection, and because and then I will do ileal transverse anastomosis. After doing common loop, I will remove the common loop, and then I will Then you will perform the ileo transverse anastomosis. Okay, then yes, how will you manage the patient post-operatively? and then I will keep the patient NPO. I will intraoperatively. I will close all the windows, any mesenteric windows that was previous source of internal herniation.
and then I will keep patient NPO for 3 days, and once And we will keep the patient NPO. What about the fluid management? I will give fluids, and I will keep this patient on. Which fluid will you give the patient? I will give her ringer lactate and 5% dextrose saline, uh, Okay. uh, and Okay, so on the second post-operative day, so you notice that the patient is is in she is confused and complaining of burning in her feet, and you also notice that the patient had developed a nystagmus. okay, it means that because these patients are liable to have nutritional deficiencies, because these patients have a deficiency of vitamins, electrolytes, calcium, magnesium, selenium, and Now, what will you do? What will you do? they have iron deficiency. I will What give will her you a do? I will give her multivitamins How will along you with give? How the will you give her multivitamins? I will give injection multibionta Multiband. IV, yeah, in the drip, and Okay. I will also check serum calcium level, because these patients have Calcium is normal. white Okay, the vitamin D. calcium is normal. Okay, then I will also check her metabolic profile, vitamin B12 and folate and iron, Now the patient has because developed, yes, you notice that after a few hours, the patient is disoriented and he is, it's complaining of, attendant, they are complaining of the patient as a memory problem. yes, these patients have Wernicke's encephalopathy, the thiamine deficiency with What will you do? uh, I will give her thiamine, and How will you give them? I will give thiamine. What will be the dose and what will the route? I cannot appreciate the exact dose, but I will consult with the nutritionist and medical Okay, thank specialist. you. Okay, thank you. Thank you, Dr. Khan. Yes. Now, let, yes, Usman. Yes, first of all, I would have picked this obstruction and intervention. Spend more time in going inside again. It spent 24 hours. I should have gone within 6 hours. I would have performed laparotomy if she is not improving with the conservative measurements. And I was late in picking nutritional deficiency. And because these patients have bile reflux and malnutrition, so it should be kept in mind. And mm, uh, uh, regarding fluid management, because these are patients have fluid electrolyte imbalances, I should started dextrose along with normal saline and ringer lactate from the beginning. From the And beginning. I should have put Foley's catheter. I forgot about Foley's catheter as well. Okay. Okay. What else? जी sir. एनजी You tell एनजी डाल further. दी थी एनजी डाल दी थी. And okay. So to begin with, the patient, 45-year female patient who presented with a repeated episode of vomiting, abdominal pain, distension, and along with the absolute constipation. That makes it the case of interspinal obstruction. Hmm. So now you have to run through the differential diagnosis. What could be the cause? It could be the adhesions or anything related to the hernia. So then you go, if you ask me that there is a history, I'm suspecting intestinal obstruction, not the gastric outlet obstruction or the reflux, right? So 1 year after, initially I didn't give you the information that the patient underwent the laparoscopic gastric bypass. So once you ask for it, after going through the examination and giving the X, you did the X-rays, and then I give you the idea there. There's multiple there the air fluid level. Then you ask for this history there. This patient has probably intestinal obstruction. Then you ask for is there any history of the previous surgery. So you picked up the diagnosis that this is laparoscopy. Patient underwent the laparoscopic gastric bypass, and you suspected that this patient has developed internal herniation.
And you rightly went for the contrast and CT scan with oral and even with upper GI series. Um, Repeatedly, used to ask you which fluid you will administer to the patient. So initially, you started up with the normal saline and the ringer, okay, fine. But if you have given they started with the dextrose, so these patients, they are at risk of developing thiamine deficiency, because this patient, if you would have asked me whether there any previous history of similar complaints, you then this is in my checklist. So this patient was having a similar complaints which were spontaneously resolved for the last 4 5 months. Patient was having similar complaints. So these patients, they are taking less. Their appetite is reduced. They are not. Then you need to ask. Yes, this patient is following the vitamin supplementation, taking the supplementation or not. Is she under regular follow up? So maybe the patient, they are not taking their regime. They are not taking their multivitamin supplement. So they are at risk, particularly the female patient. They are at risk of developing the thiamine deficiency. So the patients with the post-bariatric surgery, particularly the laparoscopic gastric bypass, these patients, if you start up with the dextrose, so the patient can develop the Verneux's Korsakoff syndrome, right? So there are three symptoms: the ataxia, along with the nystagmus, ophthalmoplegia, altered mental status. So the initial signs and symptoms are the patient are lethargic, they are very depressed, irritable. So I gave you the hint, yeah, the patient seems to be very tired, right? So so once you start off with the dextro, the patient develops these symptoms, the altered mental status, then the ataxia. So if you don't treat them in a timely manner, the patient may develop irreversible damage, neuronal damage. So what you have to do is, you in these patients, you need to give the prophylactic dose of thiamine. Prophylactic dose is 100 milligram intravenous. But if you are suspecting it's a thiamine deficiency, you need to give the therapeutic dose. This 500 milligram intravenous STAT. Then you need to repeat it 3 times a day. TDS for the initial 3 5 days. Then you have to reduce it 250 milligram पे ले आएंगे, फिर उसके oral पे लेके आएंगे, along with the other multivitamins. It's very very important कि आप उसको टाइमली मैनेज नहीं करेंगे तो पेशेंट को इरिवर्सिबल डैमेज होती है. It's very important कि जब भी बायोट्रिक सर्जरी के पेशेंट आएगा, पेशेंट इज complaining of vomiting, patient is dehydrated, and you need to start up the dextrose, क्योंकि डेक्सट्रोज जो है ग्लूकोज, जितने भी सेल्स है ना, आरबीसीज, जो आपके नर्व्स हो गए, मसल्स हो गए, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल, दे नीड दिस डेक्सट्रोज, डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज. सलाइन। उसकी जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसके लिए थायमीन रिक्वायर्ड है. जब थायमीन नहीं होगी तो इनको ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो उनका सारा पे ये डिस्टर्ब होगा. तो इसी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और बाकी चीजें शुरू होती हैं. तो ये है टू कट शॉर्ट कि ये हमने अपने एज ए इमरजेंसी जो हमारे से रिलेटेड है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस सिनेरियो प्रीवियसली एज वेल, थायमीन डेफिशिएंसी. So then moving on to this, yes, the CT scan could be the कुछ भी हो सकता है, इस पे ना आए आपको ना, सेंसिटिविटी स्लाइटली जरा कम है इसकी. और फिर नीड टू कम्युनिकेट विद द रेडियोलॉजिस्ट, को बताना है कि दिस पेशेंट अंडरवेंट लैप्रोस्कोप गैस्ट्रिक बाईपास, क्योंकि सारे उसके जो है उसको भी पता हो, ताकि उसने अपने जो एनाटॉमी उसकी चेंज हुई होगी सारी। चेंज हुई हो. ओरल कंट्रास्ट कब देंगे? वो तो जो है ना, अगर आप लीक सस्पेक्ट कर रहे हैं। नो लीक नहीं, इसी में दिस पेशेंट में अच्छा, आपने कंट्रास्ट देना, कब देंगे कंट्रास्ट? नहीं आइडिया इसका कॉन्ट्रास्ट कब देना है। देखिए नॉर्मली जब कंट्रास्ट देते हैं 2 3 घंटे पहले देते हैं, जब अपनी बाउल को देखना होता है ना, तो 2 3 घंटे पहले के स्टमक एम्प्टी होगा, आगे तक तभी पहुंचेगा ना. हम्म इसमें आपने क्या किया, दुही पेशेंट सीटी स्कैन की तरफ जा रहा है, तो ऑन द हम्म, वे जो ना आपने उसको पिला देना, और साथ ही उसका सीटी स्कैन शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टमक का तो पाउच ही कोई नहीं है, सही वो है, तो ठीक। फटाफट उसमें चला जाएगा. लेकिन अगर आपने उसको पहले पिला दिया है, तो आपका सीटी स्कैन नेगेटिव आएगा, उसमें आएगा तो कुछ भी नहीं है. हम्म तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको रेडियोलॉजिस्ट को बताना है कि इसकी पहले ये सर्जरी हुई है. तो बाकी सही है। ठीक है, यू पिक्ड अप कि यस कि ये पेशेंट सिम्टम्स, abdominal पेन परसिस्टिंग है, इसकी टेंडरनेस है, तो यू वेंट फॉर द लेप्रोटमी. लेप्रोस्कोपी की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बोलने वाली वो थी कि वंस यू हैव पिक अप द डायग्नोसिस, तो आप उसको बीच में करते हैं कि आपने यू विल इन्वॉल्व योर बैट्रिक सर्जन, तो इसकी हाँ, रीड सर्जरी है. और फिर देन यू गोइंग फॉर द आइलियो ट्रांसफर नेस्टोमोसिस, रादर देन यू कैन आस्क कि जी इसका कोर्स पहले रू हुआ है ना, रू लिम लिया हम्म गया, तो वो कितना लिया था उन्होंने, प्रीवियस नोट्स में से पूछने चाहिए थे कि उसने हम्म बायोटिक सर्जन ने किया किस लेवल पे नेस्टोमोसिस किया हुआ है, उससे कितना हम्म आगे है.
50 सेंटीमीटर चला भी, क्योंकि जनरली जो रू एंड वाई होती है ना, लिम जो होता है, ये कितना 70 सेंटीमीटर होगा, डिपेंड, हाँ कई दफा तकरीबन ये छोटे बना। 150 सेंटीमीटर का भी होता है। जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना पेशेंट का वेट लॉस या बाकी उसके ऊपर हाँ। डिपेंड करता है कि कम रखा हो, हम्म, कम उन्होंने लिम रखा हुआ तो आगे काफी ज्यादा आगे है, हम्म, तो अगर उसमें से निकल भी तो दैट डजंट मीन कि आप आइलियो ट्रांसफर एनास्टोमोसिस कर देंगे। हम्म, ठीक है, तो आप उससे पूछते हैं कोई कंटेमिनेशन तो नहीं थी, और कुछ चीजें तो नहीं थी, डिस्टल लिम्ब उसका कितना पड़ा हुआ है, जहाँ पे सही। रिसेक्शन आपने कर दी, उससे डिस्टल आइलियम कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोटिक सर्जन को बीच में इन्वॉल्व करना, आपने हाँ जो ये आफ्टर में डाइटिशियन को उनको बीच में क्रिटिकल केयर वाले को इन्वॉल्व हम्म, किया जा सकता है, लेकिन तो ये चीजें जो कि हम कर सकते हैं, उसको इन्वॉल्व करेंगे बीच में। तो आई हम्म, थिंक ये वाले था इसमें जो मेन जो कैश पॉइंट है। अभी तक तो मेरा जो सिनेरियो था उसमें इन्होंने ये वाला तो नहीं पूछा कि नहीं इंटरनल इस तरह का। हर्निएशन का, हाँ। इंटरनल हर्निएशन का नहीं था, लेकिन ये है कि ये हमें थोड़ा सा कि मैं इसको हम्म, मैं बीच में जो ना हम्म। डिस्कस करना और कुछ चीज। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया मेरा, यही और कुछ चीजें तो बता दो। नहीं और तो इसमें कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी तो इसके मेनली दो ही प्रोसीजर ज्यादा होते हैं ना, एक इसमें स्लीव हम्म, गैस्ट्रेक्टमी ज्यादा होती है और एक दूसरा वो बाकी हम जो कर है ना। लेते हैं, बाकी सिनेरियो जो होगा हाँ। ना उसके अंदर फिर आ जाएंगे, हम्म, तो एक नए हम्म, सिनेरियो के अंदर दूसरी कॉम्प्लिकेशन हम्म, जो है ना वो डिस्कस कर हम्म। लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कि इससे रिलेटेड और कोई चीज नहीं कोई। नहीं और कुछ नहीं है इससे related। सर नुमान कुछ है? नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा, आगे चले। अभी अभी कौन मैं बन जाता हूँ कैंडिडेट, और सर नुमान आप पूछेंगे? सबकी यार तबीयत मुझसे जो पूछना नहीं जा रहा था चले आज। मैं नहीं हो पूछता हूँ सके फिर तो आज हम। तबीयत जो है चले, आप जो है ना पूछेंगे। नो डॉक्टर शफकत, हैव यू स्टार्टेड विद ऑन हैव यू स्टार्टेड विद योर रिकॉर्डिंग? एक लेट लेट इसको। Okay, Dr. Shafkat, you have a 40 years old female who underwent sleeve gastrectomy 5 years back. Now she presented with yellow discoloration of her eyes, anorexia, nausea, vomiting, and abdominal pain. How would you approach with this patient? So this patient is a post-sleeve gastrectomy, and now she has presented with the jaundice. So I will take the history from the patient, and I will ask about the duration of the symptoms, the duration of the jaundice. How did she notice it, and what are the associated symptoms? Is it the priority would be to distinguish whether it's a obstructive jaundice or medical jaundice. So I would like to ask the whether the patient having any clay-colored stools, history of clay-colored stools, pruritus, and any prodromal symptoms, and what is the duration of the jaundice. How would you differentiate between uh, hepatic jaundice and non-hepatic jaundice? In case of the hepatic jaundice, the patient have the prodromal symptoms like malaise, anorexia before the start of this jaundice, and it's associated with a low-grade fever. So then the patient developed the jaundice, and along with the pain in the right hypochondrium, the liver would be enlarged. So in case of the Okay. obstructive jaundice, the patient would be having a jaundice which is could be progressively increasing, or it could be intermittent jaundice associated with the clay-colored stool or pruritus. So there will be absent prodromal symptoms. She has intermittent jaundice and she has on and off fever, pain in right hypochondrium. So what would you investigate? How would you investigate this patient? So history of fever, for how long she is having fever? For 3 days. For 3 days. So that means jaundice, fever, and pain. So I'm suspecting cholangitis in this patient as well. So, so my suspicion would be that most likely these patients are at risk of developing the gallstones. So there could be possibility of the Count Wild stones. So I will ask the other. I will keep the other differentials in my mind, and I will keep in mind whether the patient having other comorbids, taking any other medications, any other history of the surgical intervention. No, there is no other history of any surgical intervention, but it was only sleeve gastrectomy. And Okay. ultrasound revealed multiple gallstones. Her ALP is raised, and there is a stone in distal CBD. How would you manage this case now? Okay. So what is the conditions that the patient has stable? So, what are the vital signs? Yes, patient is stable. She is having fever and pain and tachycardia. Okay.
So that means the patient having a cholangitis, I will start off, I will admit this patient, and depending upon the hemodynamic stable, patient will require the resuscitation and broad-spectrum antibiotics along with the analgesic. And I would like to see the response to the treatment. So whether the patient, the pain reduced or not, fever settled or not, and along with the, I will. Pain is reduced, fever is not settling, and jaundice is increasing. Jaundice is increasing. So that means the patient, this patient will require the intervention. So ultrasound already showed that the common bile duct stone. What is the size of the stone? It is 1 centimeter. It's a 1 centimeter. Okay. So Yes. then I will discuss the case with the gastroenterologist, and I would arrange the ERCP with sphincterotomy for this patient. So to relieve the. Okay, gastroenterologist did ERCP, but he failed to relieve the stone. Okay, so has he passed the stent or not? Has he No, put he in the was stent? unable to no, he was unable to negotiate So that means, this. okay, that means it was a failed ERCP. So Yes. then I would discuss this case with my interventional radiologist for the possibility of percutaneous PTBD, percutaneous transhepatic biliary drainage, and possibly placement of the stent. Okay, your intervention, what care would you like to take before doing PTBT? Yes, we will weigh the patients. We would like to see whether the patient has coagulation is not deranged, so need to be sure that, and this is the most important thing. So obviously, Okay. apart from the. Okay, your intervention radiologist failed to retrieve the stone with the PTBT. That how would you do remove this surgically now? Your minimum No, invasive procedure. they have failed. So then the next step would be there's a possibility as well. Before going for the surgical, if there's a possibility, there's a gastroenterologist is having the capability, expertise of doing the endoscopic US guided drainage. If he can do, if he can, US guided hepaticogastrostomy. But if these are not available, then obviously the patient will require the surgical exploration. I will discuss with the anesthetist, and we will prepare the patient for the surgical exploration. Which surgical exploration would you like to do? If the patient is stable enough, then we will go for the laparoscopic common bile duct exploration. If the patient is stable enough, the patient is not stable enough, so uh, then we will go for minimal. We will do minimal, like we can do the gallbladder distended. We can put in the percutaneous catheter can be passed to the gallbladder. And what would you do about the stone in CBD? So once the patient has been stabilized, so later on we go again and do the. I will ask my colleague who is having experience in doing laparoscopic common bile duct exploration. So then I will do. Otherwise, otherwise after stabilizing the patient, I will refer the patient to the hepatobiliary surgeon. Okay, what are the biliary drainage procedures which can be done? Can you enumerate some biliary drainage procedures? Yeah. So the biliary drainage Surgical, procedure. surgical. Surgical. Yes. Okay. So surgical choledochodynostomy, choledochodynostomy, who and why choledochodynostomy, and transduodenal sphincteroplasty. Okay. And how would you do transduodenal sphincteroplasty? It's you need the steps are the cauterization of the duodenum, and then opening the duodenum, and then location of the ampulla. Which part of Then duodenum would you? second part of the duodenum. Second Okay. part of the duodenum, and then the locating the ampulla of Witter at the 1 o'clock position. So you need to make an incision, and with one stage, and then you have to extend your incision, and one stage. So that way you can extend the sphincterotomy. Okay. And how would you close the duodenum afterwards? Duodenum will close in 2 layers.
Okay, primarily, or would you like to place some stent? Any? In the stent in where in the duodenum? Yeah, No, yes. not Okay. in the duodenum. Okay. Okay. You have done choledochoduodenostomy. Sorry, sphincteroplasty, and post-operatively there is bile leak from the duodenum. Okay, so that means there is a leakage from uh, the duodenal repair side. Yes. So it depends upon the patient condition and the patient, what are the vital signs, and what's the abdominal examination, finding of the abdominal examination. So the management will depend upon that. And whether the drain was placed inside, and if it's a controlled fistula, so then I will manage it conservatively, and maybe I have to do the get the help of the radiologist to drain the collection. Okay, if it is a persistent leak and there is a persistent patient is developing biliary peritonitis and there is blowout of duodenum, what would you do? Okay, if it's a generalized biliary peritonitis, obviously then patient will require a re-exploration. So um, just, uh, I will arrange the space in the theater and get the high risk consent. And again, I will take back to the patient to the theater, and I will get the help from my senior colleague. So in this patient, after doing the peritoneal lavage, so I would like to know what is the extent of this hole in the duodenum, and what is the condition. Most likely it will be friable. Yes. What would you do now? Now I have the different options. So one option is just putting in the Foley catheter and making it a controlled fistula, and then taking a bursting suture over it, and the peritoneal lavage, and putting the drain in the um, paraduodenal area. Okay, thank you very much. Thank you. जी, इसमें जी सर नुमान. ठीक था यार, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मेरे ख्याल में. अच्छा एक्सप्लेन किया सारा, और कॉम्प्लिकेशन भी उसने सारी पकड़ी हैं. ठीक है, फिलहाल मेरी तरफ से तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं निकला. एक पॉइंट क्लियर करें कि अगर स्टोन आपका स्टक हुआ हुआ है और अपना कोलेंजाइटिस है, तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी ईआरसीपी मस्ट है आपकी विद इन 48 आवर्स. सर वो फेल हो गई है ना, नहीं, वो तो वो कराई है. ईआरसीपी तो हमने कराई थी ना सर. उसने पहले कंजर्वेटिव ट्राई किया ना शफाकत ने. हाँ, तो उसका सर कोलेंजाइटिस का पूछा था ना, इसकी क्या स्पेरिटी क्या है, इज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. तो मैंने तो पूछा था कि व्हाट इज द कंडीशन, मैंने कहा पेशेंट इज स्टेबल, फीवर है, ठीक है. तो ग्रेड 1 है तो फिर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक से सेटल हो जाता है. उसके बाद फिर आप उसको फिर आगे जो स्टोन निकालना वो करेंगे. अगर उससे नहीं, आपको ग्रेड 2 का ऑनवर्ड है, तो देन यू नीड टू गेट द ड्रेनेज, अर्जेंट अपनी ड्रेनेज करवानी. तो अगर अच्छा ग्रेड सर. 1 वाला रिजॉल्व नहीं कर रहा, जिस तरह ये वाला था, तो फिर इंडिकेशन थी ईआरसीपी और उसकी करवाई जाए, ड्रेनेज करवाई जाए. अच्छा सर, इसमें अगर आप ना हाँ, कोलिडोकोड्यूडेनोस्टमी बंदा डायरेक्टली कर दे और स्टोन पड़ा रहे, तो वो भी तो मसला हल कर देती है ना. लेकिन उसके बाद में सम सिंड्रोम जो है ना, रिकरेंट, उसके बाद में भी कोलेंजाइटिस चलते रहेंगे, स्टोन जो पड़ा हुआ है ना पीछे, हाँ. ठीक है. तो वो प्रॉब्लम, वो उसकी प्रॉब्लम होगी. ओपन. अच्छा, ओपन सीबीडी जो अच्छा, एक्सप्लोरेशन उसका नहीं, होती है. उसका देखिए, उसका क्या है, उसके प्रोसीजर्स है ना, कि आप उसका लेप्रोस्कोपी जो बात मैंने की थी ना, कि किसी और का हम अपने उसको ले लेंगे, उसके साथ लेप्रोस्कोपी कॉमन बाइल के एक्सप्लोरेशन के साथ क्या है, कि आप उसको ये फ्रेगमेंट जो उनको भी तोड़ सकते हैं. जो स्पाई कैमरा होता है, लिथोट्रिप्सी लिथोट्रिप्सी होती होती है, है बेसिकली. हाँ, लिथोट्रिप्सी होती लिथोट्रिप्सी है, उससे होती है. तोड़ सकते हैं, ठीक है ना. तो स्टोन उसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं. ट्रांसड्यूडनल स्फिंक्टरोप्लास्टी, वो तो आपने पूछा है ना, तो मैंने बताया. अदरवाइज ट्रांसड्यूडनल स्फिंक्टरोप्लास्टी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस और बाकी चीजें जो ना, वो हाँ. मोबिलिटी ज्यादा उसकी. तो अब तो ये वाली चीजें आ गई हैं, तो उसके जरिए वो कर लेते हैं. ऊपर से जो परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक जो है ना, कोलेंजियोस्कोपी हाँ विद जी. रिमूवल, उसमें आप स्पाई कैमरा डालते हैं, जिसमें उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, लिथोट्रिप्सी उसके साथ है ना, लेजर के साथ तोड़ देते हैं, ठीक है. तो इवन ईआरसीपी के साथ भी उसके चैनल में से भी डाल के वो कोलेंजियोस्कोपी कर लेते हैं.
तो ये ऑप्शन है। अब मैं ये कह रहा था, आपने दिया था मुझे स्लीप गैस्ट्रेक्टमी का। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी देखें एनाटमी को डिस्टर्ब नहीं है, यू कैन डू द ईआरसी, कन्वेंशनल ईआरसी। यही सिनेरियो होता है कि नहीं जी पेशेंट की गैस्ट्रिक रू एंड बाईपास वाई हुआ हुआ। who and why, then how will you remove these stones? अब ERCP, conventional ERCP will not help this patient, कर ही नहीं उसमें क्या सकते। लेप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक होती है ना, वो लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड ईआरसीपी होती है। अब इसमें देयर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक आपके पास है यूएस गाइडेड ERCP, बलून, डबल बलून एंटेरोस्कोपी होती है, ठीक है। दूसरी है लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड ERCP, वो आपके पास है। फिर ट्रांसहेपेटिक वाला भी आपके पास है। लेप्रोस्कोपिक कंबाइंड लग एक्सप्लोरेशन, वो भी आप ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें अभी आपने उसको क्या कहना है कि मैंने रेफर हाँ कब करना है हाँ, कि तो मैंने ये मैं हेपेटोबिल। कहता हूँ, ये आप सिनेरियो, ये सिनेरियो में लेके आते हो, तो फिर उस पे होता है कि ये पेशेंट है, तो अब क्या करेंगे जी। तो अब अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर फैसिलिटीज, अवेलेबल फैसिलिटीज, जहाँ जिस सेटिंग में आप बैठे हुए वहां पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उसके इक्विपमेंट कैसा है, पेशेंट की जो इंडिकेशंस क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप आगे पे चलेंगे। तो आप उसको डबल बेलून एंटेरोस्कोपी की भी ऑप्शन है, दूसरी लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड ERCP। अगेन अब ये वाले करने के लिए क्या करूंगा, आई विल अगेन टेक द हेल्प फ्रॉम द सर्जन हु हैज मोर एक्सपीरियंस इन डूइंग दिस काइंड ऑफ द प्रोसीजर, एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स, राइट। तो लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि आप ना, वंस यू हैव क्रिएटेड द नीमोपेरिटोनियम, उसके बाद आपने जो स्टमक के होगा ना, स्टमक अपने लेना, यू नीड टू टेक अ फर्स्टिंग सूचर, फर्स्टिंग सूचर लिया, ठीक। और उसको ऊपर आप ले आए नीमोपेरिटोनियम जो ना आपने, उसके अंदर ही आपने ये जो ट्रोकार है ना, जो ये डाल देते हैं, ठीक है। पोर्ट आपने डाल दिया डायरेक्ट उसके अंदर ही आपने ड्यूडेनोस्कोप के अंदर जानी, और नीमोपेरिटोनियम आप उसको डिफ्लेट कर देंगे, उधर से ही आपकी ड्यूडेनोस्कोप जाएगी ERCP, ERCP आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, और उसी सेटिंग में अपने चूंकि लेप्रोस्कोपी भी कर रहे हैं, तो यू कैन डू द कोलिसिस्टेक्टमी इन द सेम सेटिंग, कि आपने इस पेशेंट है जिसकी स्टोन भी हैं, साथ उसके गाल स्टोन्स भी हैं, दोनों अपने कोलिसिस्टेक्टमी भी करते हैं, आप सेम कर सकते हैं। आपने CBD स्टोन भी क्लियर कर लिए और उधर से भी कर लिया। दूसरे बार लेप्रोस्कोपिक कॉमन बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, कि लेप्रोस्कोपिक कॉमन बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन थ्रू ट्रांसिस्टिक या ट्रांसपोलिडोकल अप्रोच के थ्रू, वो आपने किया, साथ ही कोलिसिस्टेक्टमी कर ली, ठीक है। और दूसरे मैंने बताया था डबल बैलून एंटेरोस्कोपी। डबल बैलून एंटेरोस्कोपी की होती है, ये दो बैलून होते हैं इसके ऊपर ना, स्कोप के ना, 200 सेंटीमीटर किसका होता है। और उसमें क्या कहते हैं, एंडोस्कोपिस क्या कहते हैं, पहले जो आगे वाला होगा ना बैलून, उसको वो इन्फ्लेट कर देगा, और पिछले वाले को जो चैनल उसको आगे, वो जैसा आप कह लें कि जो ओवर उसके ऊपर ना पुश करती है इंटरेस्ट सारी, उसके पुल होती आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करके वहां तक पहुंचते हैं, एम्पूला तक पहुंचते हैं। इसमें ज्यादा फनकारी तो एक और भी चीज है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ज्यादा है। एक और भी क्या चीज है, स्टेंट डाल देते हैं। जो जो आपका जो रेमनेंट है ना, जो एनास्टोमोसो हुआ है, और एक पीछे स्टमक रेमनेंट पड़ा हुआ है, इसके दरमियान में क्या करते हैं, एंडोस्कोपिकली स्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। उस स्टेंट के थ्रू ना आप फिर चले जाते हैं वही गैस्ट्रिक रेमनेंट में, और आगे फिर जेजुनम और उधर ड्यूडेनम, और वहां पे इम्पूला तक चलेंगे। ठीक है, ये वाला करते हैं जिसमें आप रिपीटेड आपको ERCP करनी पड़ सकती है, मतलब स्ट्रक्चर है, उसमें बार बार आपने स्टेंट डालने हैं, चेंज करने हैं, उसके लिए ये वाली ऑप्शन है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज द इंडिकेशन, और आपकी अवेलेबल फैसिलिटीज क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। तो आपके ये सारी ऑप्शन है, लेकिन इन ऑप्शंस का पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें किससे करना है, एक्सपीरियंस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और ऐसे सेंटर में जहाँ पे जो लेप्रोस्कोपिक जो CBD एक्सप्लोरेशन करने वाले भी, उनकी सारी एडवांस चीजें। लेप्रोस्कोपी सेंटर हाँ जो है तो, हर वहाँ हाँ तो ये तो आपने मेरा ख्याल है। ऑब्वियसली, ये तो वो थिएटर भी वो होते हैं जिसमें फ्लोरोस्कोप भी थिएटर के अंदर होती है। वो तो हाइब्रिड वो इंट्रो। तो हाँ, वो तो फ्लोरोस्कोप तो हमारे भी जो आम थिएटर है वहां पे भी, जो सी आम है वो तो वहां पे है वो, लेकिन ये कि ये वाली चीजें एक्सपर्टीज क्या है ना, कि आपने उसको लेप्रोस्कोपिक कम बाइल्ड एक्सप्लोरेशन करनी है, फिर आपके पास जो ना स्पाई कैमरा होता है, लिथोट्रिप्सी वाला, ठीक है ना, फुगाटी कैस्ट, फिर उसमें आ जाती है डिस्कशन के लेप्रोस्कोपिक कॉमन बाइल्ड एक्सप्लोरेशन करनी, तो वो किस तरह आप करेंगे। लेकिन ये ऑप्शंस का एक पता होना, यही सिनेरियो इसको आमिर को आया, ये अभी भी ये हाँ सेम जी। चीज था, कि पोस्ट जो गैस्ट्रिक बाईपास काउंट बाइल्ड एक्सपोन था, ये जी सिनेरियो सर। उसको आया था। अच्छा चलिए, मैं अभी देता हूँ सिनेरियो, ये तीसरा हो जाएगा, फिर हम ना फिर खत्म कर देंगे।
ठीक है. Okay, 40-year male patient has presented in the emergency department with the history of abdominal pain, anorexia, and vomiting. He underwent the laparoscopic gastric bypass 3 weeks ago. How will you approach this patient? First of all, I will like to take the history from the patient. What is the nature of vomiting? What is the number of episodes of vomiting? What is the color of vomiting? It is projectile or non-projectile, and what is the abdominal condition of abdominal pain? It is severe, or it is a colicky pain, or it is a excruciating pain. What are aggravating or relieving factors? Then I will at the same time I will start So what are your resuscitation. differential diagnosis? My differential diagnosis is that patient is probably having bile reflux because he has undergone gastric Roux-en-Y gastric bypass. He has undergone Roux-en-Y gastric bypass. Roux-en-Y gastric bypass. Okay. Because these patients have more chances of reflux, and I would also like to examine his abdomen, whether it is soft So or rigid. you're suspecting reflux in the patient. Yes, I will. I am suspecting reflux, and also he can have obstruction, and he can also Obstruction. have. Okay. Yes, he Mhm. can have. I would see whether abdomen is distended or not. What are the differentials? My differential would be reflux. My differential would it is he can have obstruction. He can have dumping syndrome. He can have uh, uh, So, peritoneal patient's pulse biliary. patient pulse. Huh? He has a anastomotic leak, and so these are my differentials. Okay. So Right. So his pulse is 105 and blood pressure is 110/70 millimeter of mercury. Abdomen is slightly distended. So okay, now what will be the next step? I will pass a nasogastric tube. I will start IV fluids and antibiotics, and I will send baselines, a complete metabolic profile. I would like to know about electrolytes, and I will also then ask the radiologist to do X-ray abdomen, erect and spine, along with history that he has undergone Okay. gastric bypass, and I will do digital rectal examination. I What will is also see why are you ordering the X-ray? to see whether there is any element of intestinal obstruction or not, to see Okay, air fluid levels. there is no element of obstruction. Then I would like to have contrast and a CT scan of the abdomen to see whether there is any evidence of strangulation or obstruction, any point Okay. of demarcation. Okay. Uh, The CT can reveal the bowel is thickened. okay. Small bowel is thickened. At which point? It's probably ileum thickened. Okay, then it means that I would contact the operating. I will try to contact the operating surgeon and get details of previous operation. That what was the previous operation done, and It was Roux-en-Y gastric bypass. okay, it was a gastric bypass. I will like to know the details. What was the length of Roux loop and what was the length of 70 centimeter. yes. Okay, then I would ask the radiologist to do the contrast and a CT scan with oral and Again, IV contrast. No, you I would go for the ask that. again. Repeat. No, You I would like have to repeat the CT scan? no. I would ask the report that what is the transition point, and There is no transition point. I will No, he ask has him. given it. Yes, he is suspecting probably there's a portal vein thrombosis. Okay, if there is portal vein thrombosis, then I would like to contact gastroenterologist and interventional radiologist. I would start anticoagulants, and I will Which anticoagulant will you see. start? Which anticoagulant I will will you start? I will start with a heparin, 80 milligram per kg, IV Milligram per infusion. kg. Yes, 80 international units per kg.
IV stat, and then 20 international units in the form of infusion. And I will ask the gastroenterologist to interventional radiologist, because he has portal vein thrombosis. If he can pass the stent through the sorry, no stent, I will keep on anticoagulation, and I will Where will he pass this time? and portal vein. In the portal vein, you will request for the stenting of the portal vein. Yes, How will he pass the stent? through tips. Transjugular interhepatic portosystemic shunt he will make. Okay, you will ask for it. Yes. Okay. And then I will see the response, whether it is this thrombosis relieved. And So why are you going for this stenting? Why do you want to get past this tips? You are saying the portosystemic shunt. That is the portosystemic shunt, right? So that is yes. inside the liver. No, I would ask him to put stent in a portal vein, not in a Portal vein. hepatic vein. So why do Yes. you want to perform this? Why do you want to put a stent at this stage? Because if anticoagulant does not work, then we can go for a stent. Okay. Okay. Yes. Okay. Then what will be next step? And then I will admit I will keep monitoring the patient, and constantly I will consult a hepatobiliary surgeon and gastroenterologist to monitor the response, and I will see whether the patient improve or not. Despite the anticoagulation, you have started with the heparin and abdominal pain is increasing, and the patient has also developed the tenderness. Okay, then I will because I don't have experience in treating such patients, then I can refer this patient to a tertiary care hospital with hepatobiliary unit. You are in the tertiary care hospital. Then I will contact my senior colleagues to help me regarding this case, and hepatobiliary colleagues. What will they do? I will. I don't have the idea that what would they do. Uh, Probably they will do some bypass procedure for this. Okay, thank you. Ji. Now, Usman, जी सर. please comment on your performance. सर पुअर परफॉर्मेंस है इसमें, तो मैं बिल्कुल स्टक हो गया Why? हूँ ना. Huh? स्टक हो गया हूँ इसमें ना, बिल्कुल ही. Where were you stuck? ये मेरा ख्याल है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन का एक चीज आ गई, तो उसमें पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में स्टक हो गया हूँ मैं. ओके. अब इसमें जिसका स्टार्ट पे था ना कि आपसे मैं बार बार पूछ रहा था व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आपको मैं दिया था कि 3 वीक्स पोस्ट laparoscopic gastric bypass the patient is presented with abdominal pain and vomiting, right? Abdominal pain and vomiting. So you can start off with the leak. This patient had developed an anastomotic leak. A leak, also there's a collection, abscess formation, so anything. आप उसकी एब्डोमिनल पेन की जो चीजें ऑब्स्ट्रक्शन का आपने बोला, तो आप उसको ये 3-4 जो अपना डायग्नोसिस है, ये आप इन्हीं को अपने माइंड में रख के तो आपने हिस्ट्री लेनी है ना. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपने रखना है शुरू में, कि पेशेंट लीक तो नहीं है कहीं पे, ये आपका टॉप पे होना चाहिए, लीक तो नहीं है कहीं. और लीक वाले पेशेंट जो होंगे, पेशेंट आएगा आपके पास इसीलिए कोई ऐसा कोई फिजिकल फाइंडिंग विल नॉट बी एबल टू फाइंड द फिजिकल फाइंडिंग बिकॉज़ दीस आर पेशेंट आर वेरी ओबीस and you will not be able to elicit their tenderness. Similarly, distension, you will not able to appreciate the distension. तो फैट इतनी ज्यादा है तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, टेकिकार्डिया, फीवर हो सकता है साथ उसके, लीक वाले की बात कर. अब इसके अंदर जैसे हम चले, आपने यू स्टार्टेड विद द हिस्ट्री, देन द फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके ऊपर सीटी पे आ गए. ठीक है, जब जो भी पेशेंट है वो आपने अर्ली उसका गेट द कंट्रास्ट एंड सीटी स्कैन, ओरल एंड आईवी आपने कर लिया. जब वो कर लिया, आपको पता है किसी को पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की है, नाउ यू नीड टू चेक व्हाट इज इट एक्लूसिव पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, इज इट नॉन एक्लूसिव. अच्छा अच्छा, तो अब जब आ गई ना पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, क्या आपको मिल गया जी, देयर सस्पिशन ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, सस्पिशन है,
You get the CT angio, duplex scan and the CT angio. CT angio has higher sensitivity. ठीक है, उस पे आपने देखना है कि is it occlusive पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, नॉन ओक्लूसिव है, उसमें भी लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट उससे ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो लो ग्रेड है तो ट्रीटमेंट इज एंटीकोएगुलेशन, यू स्टार्ट अप विद एंटीकोएगुलेशन हेपरिन, आपने स्टार्ट की 80 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी स्टैट, देन 18 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर, ये आप चलेंगे विद द टारगेट पीटीटी पीटीटी के सॉरी 2 to 3 आपने इस पर रखना है। ठीक है, तो ये इसको आप लेके चलेंगे और उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे पेशेंट की इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर ये लो ग्रेड है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हाई ग्रेड अक्लूसिव पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, मतलब बिल्कुल ही एक्लूड हुआ हुआ है, ये उस पर पता चलेगा, सीटी एंजियो में पता चलेगा। उसमें क्या करते हैं, उसमें फिर पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्टोमी है जो करते हैं, फिर थ्रोम्बोलाइसिस है, कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस। पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्टोमी किस तरह करते हैं, ऑब्वियसली इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने हेपेटोबिलियरी सर्जन को रेफर कर दें कि दिस पेशेंट नीड्स पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्टोमी एंड कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस है। तो उसमें क्या करते हैं, पोर्टल वेन को उसी तरह एक्सप्लोर करके आपने राइट एंड लेफ्ट पोर्टल वेन उनको ऊपर लेते हैं, उसमें लूप में कंट्रोल लेते हैं, उसका जो डिस्टल है, और प्रॉक्सिमल लेना है, स्प्लैनिक वेन उधर से उसको भी अपने कंट्रोल लेना है, और फिर ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं, उसमें से क्लॉट को निकाल लेते हैं। ठीक, और उसी के अंदर क्या करते हैं, कैथेटर डाल देते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिवली ना उसी में ही टीपीए जो ना वो इन्फ्यूजन चलती रहती है। ठीक है, ठीक है, ये पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्टमी। हाँ, पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्टमी, क्योंकि इसकी जो सिंपल एंटीकोएगुलेशन के साथ जो है ना, वो कहते हैं आउटकम अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसकी थ्रोम्बेक्टमी और फिर टीपीए जो ना जो ये जो होते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो एक्टिवेटर, हाँ जी। थ्रोम्बोलाइसिस। ठीक है, तो ये होना, और इसकी बड़ी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी इफ यू आर यू अनएबल टू रिकग्नाइज, जिससे बाउल ओपनिंग थी ना, अब पोस्ट ऑपरेटिवली क्या, उससे आपने ये कर लिया, द पेशेंट डेवलप एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस पड़ गई, देन यू हैव टू एक्सप्लोर इट, पता चला कि परफोरेट कर गया हो, तो वो जो वहां पे बाउल थी ना थिकन, वो बाद में स्लफ अप कर गई। ठीक है, तो ये पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की ये जो सिंपल एंटीकोएगुलेशन नहीं है, उसमें सर्जरी का भी रोल है, अलॉन्ग विद द कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस करनी। पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्ट, अच्छा सर, ये पोर्टल वेन थ्रोम्बस और हेपेटिक वेन थ्रोम्बस जो बर्ड-गैरी सिंड्रोम है, हाँ, वो तो ये हेपेटिक वेन का ना। अच्छा, टिप्स जो हाँ, है ना, टिप्स जो कंट्रा इंडिकेशन अगर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, वो कंट्रा इंडिकेशन है टिप्स। ठीक है। ठीक है ना, वो तो लिवर के अंदर आप कर रहे हैं ना। ठीक, तो ये हाँ, ये एक चीज है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, सक्शन होता है, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, उसमें क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, वो जाके ना कैस्टर डाल के उसको वहां पे क्लाट वाली जगह चले तो उसको सक करता जाता है, पूरा अपना अच्छा, क्लियर कर देता है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। अच्छा, ये भी एक ट्रांसजुगुलर भी था कि ट्रांसजुगुलर से जाके ऊपर से आप पोर्टल वेन में आके तो इसको एस्पिरेट किया जाए, ये पहले करते थे, लेकिन इसको इसकी अपनी मतलब सक्सेस रेट इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें अभी ये कम हो गया उसका ट्रेंड। अब ये वाला पोर्टल वेन थ्रोम्बेक्टमी है या कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये हमने कर ली, एक कॉम्प्लिकेशन रह गई है सिर्फ, जो पिछला एक सिनेरियो भी आया था, वो हम वैसे हम कर लेते हैं उसको डिस्कस ना। फॉर एग्जांपल सेम पेशेंट, यही पेशेंट है, लेकिन आफ्टर 2 weeks, चल मेक इट 5 days, फिफ्थ डे द पेशेंट हैज डेवलप abdominal pain, and patient is febrile, his pulse is 120 per minute, the blood pressure is 90/60. What is your most likely diagnosis? Probably patient has anastomotic leak, Yes. Okay. and I What would will you like do? to do ultrasound to see any intra-abdominal collection. I will give antibiotics. I will resuscitate the patient, make patient NPO, admit the patient, and give antibiotics, and see what is the extent of leakage. I will ask. Ultrasound they show that there's unable to localize any connection. So Okay. because of Okay, right? then I will do oral contrast studies with gastrographin to see any leak, and if there is any leak, then I will ask the radiologist colleague. I will make the patient NPO and pass tube and start TPN, and ask the radiologist to put in a drain, and I will arrange for re-exploration of the if there is any
a minor leak, then I will do it conservatively by making patient NPO and ask the gastroenterologist to yes. Especially as deteriorating, which is increasing, and abdominal pain is You are also not audible. You are not audible. increasing. Patient's pulse is increasing and Okay. pain is also increasing. Okay. Then I can ask the gastroenterologist to put in a stent across the anastomosis and start with TPN and drainage. If a patient How improve will it be done? with You will put in the stent, gastroenterologist, gastroenterologist. endoscopic, yes, Okay. endoscopically he will put in the stent, and I will make patient NPO and let's see whether if there is a minor leak, then it should stop. If it is a major leak, then I have to re-explore the patient and revise the How will, anastomosis. okay. How will you revise the anastomosis? What was the previous operation? It was sleeve gastrectomy. It was a laparoscopic gastric bypass. It was a laparoscopic gastric bypass. Then I will open. I will contact the bariatric surgeon and ask the operation notes. And it was a Roux and wire gastric bypass. Then I can do proximal gastrostomy and feeding jejunostomy and take for elementary limb. And I will Proximal gastrostomy and yes, feeding jejunostomy. yes, and wait for the anastomosis to heal and see whether Thank you. Now, in this scenario, ये जो भी हमने डिस्कस किया है, इसमें जी सर. क्या क्या चीजें हैं कि जो आप कहते हैं कि नहीं यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या कौन सी चीजें which you think yeah, these were the missing in your सर response? एक तो सर इसमें हमें वो करना चाहिए, टेक डाउन तो करना पड़ेगा एनास्टोमोसिस, रेसिस्टेट भी करना है इसको हमने, और उसको डाइवर्जन देनी है हमने लाजमी, बिकॉज ही हैज जो उधर लीक हो रहा है उसको तो हम, और कंटेमिनेटेड फील्ड में दोबारा री एनास्टोमोसिस करना, इट विल बी ए रिस्की बिजनेस, और मेरा तो यही ख्याल है. Good thing was that you picked up the diagnosis. Yes, it's most likely it's a anastomotic leak, and you went for the contrast and CT scan. कि आपने देखना leak कैसा है. Initially you went for the conservative management. अपने पास cutaneous drainage है, और then the stenting वो हो गई. So the most important thing जो इसमें जो mention करनी थी वो ये involve the bariatric surgeon. वो तो Right? मैंने कर लिया ना. नहीं, वो तो बाद में आके you will contact the bariatric surgeon once you decided I will explore the patient and they ask you what will you do? Now and during the operation at that time it was mentioned that I will contact the surgeon and I will review the notes. So the notes are it's a laparoscopic gastric bypass. उसमें क्या ना, start पे जब patient आया आपको you suspecting the leak, you have started with the initial management. So at that time involve your bariatric surgeon and he should lead this. He should take the lead. सही है. तो ये this is the most important जो है ना, क्योंकि आपने जिससे bariatric surgery, we are not bariatric surgeon. ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बाकी को करना अगेन वो उनके एक दफा उनके कोर्ट में जो बॉल फेंकी, फिर एग्जामिनर ठीक. आपने अच्छा वो क्या करेगा ना, इस ये वाला जो सिनेरियो हो जाता है अच्छा वो क्या करेगा, ये फिर थ्योरेटिकल आपके नॉलेज आ जाएगी. लेकिन आप कहते हैं कि हाँ. आप क्या करेंगे, आप अगर उसमें ही चल रहे हैं तो फिर आपका वाइवा भी उसी तरह ही चलता जाएगा. फिर आपके प्रोसीजर आप इसमें जिस तरह आपने कहा गैस्ट्रोस्टमी की कर देंगे. ठीक है, अब ये वाला बड़ा इट्स वेरी ट्रिकी कि आपके क्या कि फिर डिपेंड्स उसका कितना लीक था, कितनी कंटेमिनेशन थी. ठीक है, हो सकता है उसके सैल्वेज उसको किया जा सकता है. ठीक है, गैस्ट्रोस्टमी अगर बाहर निकाल दी उसका होएगा कि बाकी फिर क्या होगा, हो सकता है उसको प्रॉक्सिमल के ले आते हैं. इट डिपेंड्स, वही बात है ना, ये चूंकि हाँ. वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस, तो सिंपल है कि आप उसके ऊपर को डाल दें. सही है. तो हमारा मेरा काम ख्याल है क्या है ये कि इनिशियल सस्पेक्ट करना कि ये पेशेंट किसी अरे के पास भी आ सकते हैं. जो लीक वाले हाँ. जनरली है वो बायोट्रिक यूनिट वाले ही वहीं पे पेशेंट ये जाएंगे. हमारे पास पेशेंट वो आएंगे जो लेट जो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया फिर हमारे पास आ सकते हैं जो जनरल सर्जन के पास है. तो और वो हमने इनिशियल रेसिस्टेट करके इमरजेंसी मैनेजमेंट, हमने हाँ, वो आनी चाहिए. यस, वो आनी रेसिस्टेट चाहिए करके क्योंकि और उसके बाद हमने उसको आगे रेफर कर देना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है, बाकी सर नुमान आप कुछ कोई ऐड करना चाहें? बस ये पॉइंट्स तूने बता दिए हैं। ठीक है, बस और कोई ज़हन में नहीं आ रहा। इसमें 2 सिनेरियो थे जैसे जो इसको आए हुए थे ना, बल्कि 3 जो आमिर को भी आए थे। एक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का आया था इसको आया था ये वाला लीक वाला इसको नहीं आया था। लीक वाला एक और को था, उमर को आया था। एक था ये वाला सीबीडी स्टोन वाला। तो बैटरी सर्जरी चूंकि पेशेंट भी हमारे पास आते हैं तो इसमें सिटी स्कैन पेशेंट थोड़ा अनस्टेबल हो तो फिर भी कराएंगे कि थोड़ा सा ट्राइकार्डिया वगैरह और हाँ नहीं वो ये सर हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बोला कि पेशेंट ब्लड प्रेशर 90-60 है तो आप उसको रिसस्टेट कर फिर मुझसे दोबारा पूछें कि पेशेंट की अभी कंडीशन कैसी है। ठीक है, आप पर ये फॉलो थ्रू करवा रहे हैं तो उसमें तो टाइम बड़ा लगेगा। आपने रिसस्टेट पहले उनको रिसस्टेट करेंगे सारा, फिर आप बताएं जी कि पेशेंट इंप्रूव किया कि नहीं किया। इंप्रूव किया तो देन आई विल गेट द सीटी। ठीक है, और नहीं तो improve किया ये तो बस जरूर आपने रखना है कि ये पेशेंट स्टेबल पेशेंट का सीटी कराना है, अनस्टेबल का नहीं कराना। ये बिल्कुल सर ने सही पॉइंट जो ना पकड़ा आपका। तो इनिशियली मैंने जो इसका ब्लड प्रेशर बताया था 90-60 बताया था ना। हाँ जी, ठीक हो गया। तो चलिए आज हमने फिर ये कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर ली हैं, सही है। तो इंशाल्लाह कल तक जो ना अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, ओके तो सर, ये मैं भी वालेकुम स्टॉप कर